So, a very good evening to everyone. In this class, this is our second class, and in this class, we are going to start with the poetry section, that is section 2, which comprises of question number 3A and question number 3B. Poetry section has been given 14 marks in your state board curriculum. So, in this class, as we have discussed, we are going to start with the first poem, that is poem 2.1 Cherry Tree, which is written by the most famous poet Ruskin Bond. So, now we'll move on to the introduction of the poet. I hope you all are having your textbooks with you. So, the poem is given to us on our English textbook. Introduction of the poet and introduction of the poem as well is given on page number 66. So, we'll go through the introduction of the poet. So, the name of the poet is Ruskin Bond. He was born in Kasauli, Himachal Pradesh in the year 1934. Ruskin Bond has written hundreds of short stories, essays, novellas, and more than 30 books for children. His first novel, The Room on the Roof, written when he was 17 years old, received the John Llewellyn Rice Memorial Prize in 1957. He has also published two volumes of autobiography, Scenes from a Writer's Life and The Lamp is Lit, a collection of essays and episodes from his journal. In 1992, he received the Sahitya Akademi Award for English Writing in India. He was awarded the Padma Shri in 1999. Ruskin Bond lives with his adopted family in Mussoorie, Uttarakhand. Published two autobiographies. One was The Scenes of a Writer's Life, and the second one is The Lamp is Lit. He also received the Sahitya Akademi Award and he was to grow. So again, here ecstasy means a feeling of happiness. Okay, उन्होंने जो ट्री लगाई थी, उन्होंने जो चेरी का जो बीज बोया था जिसको 8 साल लगे उगने के लिए, सो उसमें उनकी जो फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस थी उसको इस पोएम में दर्शाया गया है. He is expressing his wonder at the ways of nature and how the cherry blossoms are fragile and quick to fall. The tree gives him immense joy as he can see the stars and the blue sky through dappled green trees. Now, what do you mean by dappled? Dappled means having dark or light patches. जो झाड़ के जो लीव्स है उस पर जो डार्क एंड लाइट पैचेस होते हैं या डार्क एंड लाइट कलर की जो लीव्स होती है एक झाड़ में, सो उसको भी यहाँ पे कहीं ना कहीं रिलेट किया गया है कि जब वो उस ट्री की छाँव में बैठ के आसमान को देखते हैं, सितारों को देखते हैं, सो उन्हें एक अलग तरीके का जॉय मिलता है, एक अलग खुशी मिलती है जिसको उन्होंने इस पोएम में दर्शाया है. सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम. नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम वी शैल नाउ स्टार्ट विद द पोएम. So let's start with the poem 2.1 Cherry Tree, which is written by Ruskin Bond. So as you can see, the poem is on page number 66 and 67. So we are going to go line by line. Some of the lines will be displayed to you on the screen and those many lines will complete the explanation. Okay? We have started with the poetry section because in the students. Okay, so prose part also we are going to start, and before starting with the prose we have started with the poetry because it is considered as the easiest part of your paper pattern. So that's why we have started with the poetry section, that is section 2, and from the poetry section we have started with the first poem, The Cherry Tree. So you can see some lines from the poem are displayed to you on the screen. 8 years have passed since I placed my cherry seed in the grass. Must have a tree of my own, I said, and watered it once and went to bed. And forgot, but cherries have a way of growing, though no one's caring much or knowing. So
in this poem we can see that what the poet is wanting to tell us. So in the first stanza we can see that the poem begins with the poet recalling that 8 years ago he had placed a cherry seed in the grass because he had wanted to have his own cherry tree. He had watered the ground where he put the seed and forgotten about it. Okay, but the cherry tree had survived even though he had forgotten it. ओके, सो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि 8 साल पहले की वो बात कर रहे हैं कि 8 साल हो चुके हैं, उन्होंने एक चेरी ट्री का एक बीज जो है अपने, उन्होंने जो बीज वहाँ पे बोया था तो उसमें उन्होंने पानी दिया एंड देन वो सोने चले गए एंड फॉरगॉट, बट चेरीज हैव अ वे ऑफ ग्रोइंग, एंड देन वो उसके बारे में भूल जाते हैं कि चेरीज का एक उगने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है. जैसे हर प्लांट का, हर ट्री का उगने का तरीका अलग होता है, वैसे चेरीज ऑल्सो हैव अ डिफरेंट वे ऑफ ग्रोइंग, दो नो वंस केयरिंग मच और नोइंग, जिसके बारे में कोई जो है इतना ध्यान नहीं दे रहा था और किसी को पता भी नहीं था कि पोएट ने उस जगह वो घास में उन्होंने एक चेरी का बीज जो है लगाया है. सो इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था और कोई भी उसके बारे में केयर नहीं कर रहा था. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द first 6 lines of the poem. So I hope you must have understood. Kindly put in the chat box. Okay, so now we move on to the next lines. So the next lines are, and suddenly that summer near the end of May I found a tree had come to stay. It was very small, 5 months child, lost in the tall grass running wild. Goats ate the leaves, the grass cutter scythe split it apart, and a monsoon blight shriveled the slender stem. So these are the next lines. So the meanings are also given to you. You can just note the meanings in case you don't have the meanings with you. So you can just note the meanings with the pencil in your textbook. So the meaning of scythe is given to you. Scythe is a tool with a long blade which is used to cut grass and grain. So जब भी हम कोई झाड़ काटना चाहते हैं या ग्रेन्स जो है उसे काटना चाहते हैं, सो हम एक टूल यूज़ करते हैं, एक औजार यूज़ करते हैं जिसकी बहुत लंबी ब्लेड्स होती है जो कि मोस्टली झाड़ काटने के लिए यूज़ किया जाता है. सो साइथ इज दैट टूल. देन ब्लाइट मीन्स कॉजिंग डैमेज, किसी चीज़ को हार्म करना. देन श्रिवल्ड मीन्स ड्राई द सीड. इट वॉज ग्रोइंग अमंग द टॉल वाइल्ड ग्रास. नो वन हैड नोटिस्ड इट नॉर केयर्ड फॉर इट, but it was a tiny 5-month-old sapling. Goats grazing there ate its leaf, and a grass cutter hacked it with a sharp cutting blade. In the monsoon, a disease withered the little cherry sapling. So this is told in the next stanza. So अब वो बोल रहे हैं, and अचानक से जो नेक्स्ट जो समर था उसके मई के एंड में उन्होंने देखा कि एक छोटा सा पौधा जो है उन्होंने जहाँ पे वो सीड लगाया था वहाँ एक छोटा पौधा उग गया है. देन यहाँ पे बोला 5 months चाइल्ड. सो यहाँ पे उस सैपलिंग की एज बताई गई है कि वो सैपलिंग जो है वो 5 months ओल्ड था, मतलब 5 महीने हो. एट the leaves, the grass cutter scythe split it apart, and a monsoon blight shriveled the slender stem. So slender का मतलब होता है बहुत ही thin, बहुत नाजुक. सो आप देख सकते हैं जब कोई भी पौधा जो है 5 months का होता है सो वो बहुत ही नाजुक होता है, उसकी जो स्टेम्स है, उसकी जो लीव्स है वो बहुत ही नाजुक होती है. सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो जो पौधा है वो बाकी जो जंगली झाड़ थे उनके बीच में उग रहा था. एंड वहाँ पे जो गोट्स थी, गोट्स मीन्स जो बकरियाँ थी, वो ग्रेज कर रही थी, मतलब वो चर रही थी वहाँ पे. एंड क्या होता है, चरते चरते वो जो चेरी की जो सैपलिंग थी उसकी लीव्स जो है वो खा लेती है. एंड वहाँ पे जो ग्रास कटर जो है, जो घास काटने वाला जो इंसान है, वो अपने साइड से, मतलब साइड में यहाँ पे जो टूल है उससे चेरी का जो सैपलिंग है उसको काट देता है. ओके. एंड अ मॉनसून ब्लाइट श्रिवल्ड द स्लेंडर स्टेम. सो मॉनसून मीन्स यहाँ पे बारिश की बात की गई है,
ब्लाइट में किया था। एंड जो बारिश थी उसने जो है बारिश के मौसम में वो जो चेरी की जो सैपलिंग थी उसको एक डिजीज हो गया था, उसको जो है एक टाइप की बीमारी हो गई थी। एंड उसके वजह से उसकी जो स्टेम है, उसकी जो स्लेंडर स्टेम है, मतलब उसकी जो नाजुक स्टैंजा दैट वी हैव कंप्लीटेड। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। वी विल yes okay. So now we'll have our next stanza. So just a moment, students. So children, am I audible to you now? Is my voice okay now? Kindly put in the chat box. Okay, so again we'll continue with our class. So we were there on this slide. This is, and suddenly that summer, near the end of May, I found a tree had come to stay. It was very small, 5 months child, lost in the tall grass, running wild. Goats ate the leaves, the grass cutter scythe, split it apart, and a monsoon blight shriveled the slender stem. So here the meanings are also given to you. Scythe means a tool with a long blade used to cut grass and grain. मीन्स वो एक टाइप का टूल होता है, हमने देखा है कि जब भी हम घास काटते हैं या कोई भी झाड़ को कट करते हैं, सो उसके लिए एक सिजर्स टाइप का एक टूल होता है जिसमें बहुत लॉन्ग ब्लेड्स होती है एंड उससे जो है आसानी से कोई भी झाड़ जो है वो कट जाता है. Blight here refers to causing damage, and shriveled means dried. Slender means very delicate or thin. So here it is said that अचानक से क्या होता है उस समर एंड ऑफ मे के करीब जो है पोएट जो है जहाँ पे उन्होंने वो सीड लगाया था वहाँ पे उनको एक बहुत ही छोटा सा पौधा उगता हुआ दिखता है एंड उन्होंने यहाँ पे कंपेयर किया है कि इट वाज लाइक 5 months चाइल्ड. ओके, 5 months चाइल्ड जो है ये उस पौधे की एज बता रहे हैं. 5 months चाइल्ड मीन्स वो जो सैपलिंग था वो 5 months इट अपार्ट. सो अब यहाँ पे गोट्स की बात कर रहे हैं, बकरियों की बात कर रहे हैं. सो वहाँ पे जो है बकरियाँ जो ग्रेस करने आती है, जो चरने आती है, सो वो बाकी के घास के साथ साथ उस चेरी सैपलिंग की भी लीव्स को उन्होंने खा लिया था.
अब यहाँ पे बात हो रही है ग्रास कटर की। सो जो ग्रास कटर है उन्होंने अपने स्काइप के साथ जो है बाकी जंगली झाड़ों को काटते काटते इस चेरी की जो सैपलिंग है उनको भी उसने and a monsoon blight. So, monsoon, as you all know, refers to the rainy season. Blight here means causing damage. And फिर बात हो रही है मॉनसून की। अब वो कह रहे हैं कि बारिश के मौसम में जो बारिश हुई तो उसकी वजह से, बारिश के वजह से जो वहाँ पे जो चेरी सैपलिंग थी उसको एक डिजीज़ हो गया, उसे एक बीमारी लग गई। ओके, एंड उसकी वजह से जो है चेरी का जो सैपलिंग था वो ड्राई हो गया था, उसकी जो स्लेंडर स्टेम मतलब उसकी जो नाजुक सी जो स्टेम थी वो सूख गई थी, ड्राई हो गई थी। सो दिस इज टोल्ड टू अस इन द सेकेंड स्टैंजा। सो काइंडली, so children, again, is it getting paused or you are able to understand what I am teaching? Yes, kindly let me know.